Good morning बच्चों, welcome back after a long time. So today we are going to talk about very important topic called laws of exponents. ये सारी classes के लिए even 6th class, 7th, 8th, 9th, 10th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटक जाते हैं हम लोग. तो मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है, लॉज क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. सपोज देयर इज अ नंबर कॉल्ड x रेस्ट टू द पावर n. तो यहाँ जो x होता है बच्चों, इसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बेस. दिस इज कॉल्ड बेस एंड द पावर ऑफ x इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. Okay, so this is also called power. So here what we, how do we pronunciate this? X raised to the power n. So this is one thing. Now there are 7 important laws of exponents. Let me explain you one by one. The first law of exponent is when we have x raised to the power m into x raised to the power n. For example, when the base is same and we are multiplying two numbers with same base but their powers are different, then in multiplication क्या हो जाता है, इनकी पावर ऐड हो जाती है. So x raised to the power m plus n. Okay, for example इसको हम एग्जांपल भी कैसे देखेंगे, 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3. So what we will get is base is same तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. So the answer is 3 raised to the power 2 plus 3 means 3 raised to the power 5. This is first law. Now second law, when you are multiplying, when you are dividing the two real numbers with their same base same है और division कर रहे हैं, powers are different. In this case what happen, their powers will get subtracted. So x raised to the power m minus n हो जाएगा. तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन के अंदर. एग्जांपल क्या होगा इसका, क्विकली 3 raised to the power 3 upon 3 raised to the power 2. So what we will get, because in division base is same, तो पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 minus 2. So the answer is 3 raised to the power 1 which is equal to 3. This is second law. Now the third law of exponent. Third law of exponent क्या कहता है, when we have a number is raised to the power m and again on this another power n, when there is a power on top of another power, then power का क्या हो जाता है, multiply हो जाता है, m into n. When we have two powers on top of each other, then we multiply both powers. इसको example में कैसे करेंगे हम, x for example we have 3 raised to the power 2 raised to the power 3. So what answer we will get, 3 raised to the power 2 into 3 which is 3 raised to the power 6. Got it? So this is the third law of exponent. The fourth law of exponent is saying when we have a number which is x raised to the, if any number, if you take any number and the power of that number is 0, यदि किसी भी नंबर की पावर 0 है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है. फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, इफ देयर इज अ नंबर एंड द पावर ऑफ दैट नंबर इज 1, यू विल गेट सेम वैल्यू, यू विल गेट द सेम नंबर. यदि आप किसी भी नंबर की पावर 1 है उसका मतलब उसका आंसर आपको सेम नंबर मिलेगा. सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, व्हाट इज दिस नंबर एक्सपोनेंट लॉ इज सेइंग, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग two real numbers with their base is different but power is same. For example, x raised to the power m into y raised to the power m. Multiply कर रहे हैं, base different है but power same है. ठीक है, power is same, x raised to the power m into y raised to the power m and multiply. तो ऐसे में क्या होगा, आप you will multiply x into y and you can put whole power m. This is another law of exponent. So that is how the 6 laws of exponent. One very important law is if there is any number and the power is negative minus n, so the answer of this is the reciprocal of that number to convert the power from negative to positive.
तो हम क्या करेंगे, उस नंबर की, यदि किसी भी नंबर की पावर माइनस में है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम उस पावर के साथ, तो माइनस की जगह वो प्लस हो जाएगा. So this is another law of exponent. So that is how these 7 laws of exponents which I have explained. I hope you understood these laws. एक बार इनकी practice करो और let me know if you understood. I will give you few more examples. Solve and share it your feedback. Okay, bye.